they went back because neighboring Himachal Pradesh, they started so the companies were coming out there. They had started their setups. So all the some brass had come out there. So they're looking for schools, and they were actually shocked seeing what we are doing. Okay. Let me try to respond Yeah, please, to thank your you so question. much. Thank you, ma'am. Sir, you have to say something. Just 2 minutes, I won't take much of time. Basically, I have gone through this process. Like your questions are my questions. He was in the first group that came. But what I want to share my small story is that parents don't have to be changed. You and I have to change first. The problem is with us, not with the parents. Then she will take forward and tell you how it can happen. I did the same thing. All of us, Lisa got you on Microsoft, right? And Microsoft was given a very small price to all the schools 2 years before the pandemic. Oh, okay. Now we took that Microsoft 2 years before. We were slowly implementing it. And for me, if Bharat Malik would have been there to implement Microsoft, it would never have happened. My young team, my young children, they came in, they took Microsoft before the pandemic. Before the pandemic, we had connection of all the children. They had their password. And I think we were the first school in the country. In 48 hours, we converted offline exam into online with parent consent, thanks to Microsoft. So the mindset, believe me, I repeat, if Bharat Malik had to do, तो और 4 साल नहीं होता, because Bharat Malik का mindset अभी जो चल रहा है चलने देना है, parents नहीं मानते, so now, please, first thing is to be change our mind. If we change as an educator, we believe in what we are doing is the best, then as you saw around this school, Kiran की सारी Kiran आपने देखी कैसी? Yes. That Kiran will only glow when you change and Kiran's magic will work. Thank you very much. Give us a big hand. I'll try to answer your question in a simple way. I think my story is I think the context matters. मैंने शुरू नहीं किया था स्कूल क्योंकि मुझे स्कूल चलाना था, बिल्कुल नहीं. I have no interest in starting a school. लेकिन I think when I became a mother, जब मैं माँ बनी तो तब मेरा बच्चा एक्चुअली स्कूल जाने लगा, तब मुझे ये पता चला कि कितनी जल्दी बच्चे बोलते हैं I can't. कितनी जल्दी, वो 6 साल का था जब वो गया था. And I remember the teacher had, जब हम करते हैं essay writing, जो 6 साल का बच्चा essay writing का क्या किया था, ये है, this is a cow has 4 legs, cow has a tail, cow gives milk. मेरा बच्चा बड़ा क्रिएटिव नहीं था तब. उसने जब लिखा था वो 4 लाइंस, उसने cow has legs शायद पहले डाला था and cow is an animal बाद में डाला था. Now that was wrong. टीचर ने बड़ा सा लाल मार्कर लेके, जो हमारा जो हथियार होता है, हाँ टीचर्स के जो हथियार होते हैं वो लाल मार्कर होता है, पूरा एक लाइन वहाँ पे करके उसने कहा ये गलत. So what I'm trying to say is, very early, like sir is saying, we become the reason for children not to learn. Yes. Children will learn. पहले 2 साल में एक बच्चा क्या करता है? पहले बैठता है, फिर उठता है, फिर चलने लगता है, फिर दौड़ने लगता है. वो 2 साल में हम क्या करते हैं? हाँ बच्चा करो, बच्चा बोलो माँ, बच्चा बोलो ये. जब वो बोलते हैं I can, हम क्या करते हैं? स्कूल भेजते थे, अभी चुप रहो, 15 साल के लिए चुप रहो, फिर ये क्या बात होगी? So I think that's the shift that happened. तो जब मैंने सोचा था कि मुझे ये स्कूल चलाना है, क्योंकि मुझे लगा यार मेरे बच्चों को ये नहीं चलना, this is not the right way. So तब I remember taking him out of school. I remember calling up my husband saying, Geet, I'm starting a school. उसको लगा था कि मैं तो वैसे भी पागल हूँ. उसने कहा चलो करो. मुझे ये नहीं करना था, मुझे एजुकेशन ही बदलना था, मुझे सिर्फ मेरे बच्चे का लाइफ देखना था. So my aspiration or reason to start the school was not बड़ा स्कूल बनाना है, बिल्कुल मेरी इंटरेस्ट नहीं है. मेरी इंटरेस्ट ये है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, उनका दिल कैसे लगता है सीखने के लिए, उनका दिमाग कैसे चलता है. That was such a beautiful journey. अभी तक मुझे नहीं मालूम है, जब मैं ये बच्चों को देखती हूँ, oh my God, you guys are amazing.
और मैं कैसे आपके साथ इस जर्नी पे चल सकती हूँ. So that's the reason I started. So to answer your question, and I didn't care what parents said. मुझे कोई पड़ी नहीं थी. मुझे सिर्फ 20 बच्चे चाहिए थे. मर के 20 बच्चे आए पहले साल. 20. I didn't know who came. एक ही एडवर्टाइजमेंट मैंने डाला था 18 जनवरी 2001. मैंने कहा चल मैं स्कूल कर रही हूँ. ये मेरा घर था. मैंने अपना स्कूल मेरे घर पे शुरू किया था. और 26 जनवरी 2001 मैं जिसने मुझे फोन किया था कि चलो मैं आपको दिखाती हूँ स्कूल, उसी टाइम द अर्थक्वेक हिट. वो गुजरात का अर्थक्वेक याद है आपको? उसी दिन भगवान क्या बोल रहा था मुझे? सब हिलेगा. अगर वो मुझे नहीं रोक सकता था तो क्या पेरेंट क्या बोलो क्यों रोकेगा? So you have to understand your reason to start a school. If it is, I want to make a big school, I want to get lots of money, I want to do, you will never get teachers who love the profession. This place is run not because of me, it is run because of this incredible team that I have who come every single day, wanting to be challenged, wanting to smile. I mean, look at that. I don't know why they come also. They smile, they are joyful. It is the best thing to be around. हम भूल गए कि हमारी जो हंसी है वो शुरुआत करती है पूरे दिन का. हम सोचते हैं हम बड़े सीरियस हैं, टीचर्स को बड़ा सीरियस होना है, सबको टोकना है, right? And we forget that the smile starts the day. वो दिल पे तीर लगती है. Then everything else starts. So I have only learned this. That when I started the school, it was for a reason to understand how my child will never believe he can't. Today we have 460 children. I swear, if they do not go out and change the world, मैं भूत बन के इनके पीछे पड़ जाऊंगी. They are not here to say. Are they reading and writing? Way more than every other school. They're outperforming the top 10 schools in India in math, science, and English. So academically, they will outperform if they feel the purpose of learning. हम क्या करते हैं? हम जाते हैं इस क्लास के अंदर, हम बोलते चलो चैप्टर 3 खोलो, ये टेस्ट में आएगा. ये टेस्ट में आएगा का क्या मतलब है? क्यों पढ़ाई करनी है अगर मुझे टेस्ट करनी है? मुझे लाइफ के लिए चाहिए, right? So the narrative, the positioning, the way that we introduce why we learn, yeah, you have to change the world, यार. नहीं तो पापड़ बनाओ. पापड़ भी अच्छा हो सकता है to change the world. Having said that, पापड़ change the world. But what I'm trying to say is that today, if Riverside is doing whatever it is doing, is that despite all the factors, we have not moved away from that purpose. Writing is way more than they will do because they know they want to write. So I want to just share with you that all of you have a unique opportunity. कुल मिला के आप सब teachers या principals या founders हैं स्कूल के. On an average, if I just take 500 people per school, children do the math. How many children's lives are we impacting currently? 40 schools? 40 into 50,000 बच्चों की लाइफ यहाँ पे है, in front of you, आपके साथ. आपके जो डिसीजंस आप करते हो या नहीं करते हो, उसका सारा इम्पैक्ट बच्चों पे हो रहा है, whether you like it or not. वो अच्छा हो या गलत हो रहा है कुछ ना कुछ. 50,000 बच्चे हमारे यहाँ पे प्लस ये क्लास ये रूम के अंदर. Can you imagine the power? 50,000 children can go out and believe they can make the world a better place. What does India need? What does the nation need? What does the world need? That. तो जब हम डर जाते हैं, जब हम सोचते हैं कि पेरेंट्स डिसाइड करेंगे हम क्या करेंगे, तो गई बात, डर गया. और उस डर के जो हम डिसीजंस बनाते हैं, और होमवर्क दो, और टेस्ट करो, और ये करो, तो गए काम से. वो डर हमें आगे बढ़ा रहा है. So I think that's what I have learned. That's what my team has told me. That's what my kids tell me. I mean, they challenge you. They will tell you what they want, what they do. It's awesome. It is the best feeling in the world. So, मेरी सिर्फ ये what about request? Yes. कि आप डरो मत. बस आप डरो मत. The next challenge is manpower because
can't find such nice talented teachers. Yeah. How to train them? How Yes. to train them? Talented teachers? Yeah. Eh? Yeah, please. I have to say, we were not very talented when we started. No, how to But, train them? good point that you're asking for training. Ma'am, how many days training do we do in a year? In a year? Yeah. So, if our kids are coming like 200 days if they are on campus, definitely 60 days more we are on campus, like 260 days. That's what But we will 365 days training you. exactly. That What is the training? Even in 26 training हो जाती है. Yes. हम सोचते हैं हमें उनको एक रूम पे बंद करके उनको बोले वर्कशॉप करें, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है. But when it starts, when this lady, by the way, this Preeti, she's been with me now for 19 years. Yes, 19. And ये रोज आगे खड़ी रहती है, सब ये उनको गुड मॉर्निंग और ये मेरे बच्चे दुखी सो हाँ जैसे हंसना मना है हाँ गुड मॉर्निंग ओके गुड मॉर्निंग बट रिलेंटलेस ये वो थकती नहीं है ये फौजी थकती नहीं है अगर हम थक गए हमने सोचा देखो हमने एक हफ्ता किया किसी ने हमें गुड मॉर्निंग नहीं कहा तो अब हमने है हमें थकना नहीं है और हमें डरना नहीं है Madam, It is a I just finished Sorry, this. sorry. It's a relentless thing. So we have, of course, our plannings, our readings, our visits, our retreats. बहुत काम करते हैं. आपको टीचर मिलेगी जैसे वो आते हैं, लेकिन उनको बनाना कैसे है आपका काम है. हमने बहुत सारा सुना है हमारे टीचर्स खराब है, हमारे टीचर्स खराब है. यार कौन किसकी जिम्मेदारी है उन्हें अच्छा बनाना? हमारी. क्यों हम नहीं करते? क्योंकि वो चले जाके निकलेगा और दूसरा स्कूल ज्वाइन कर देगा. So we are more willing to have incompetent teachers in front of our children. How can we do that? अरे हमने ट्रेन किया फौजी मत जा, लेकिन अगर बाई चांस फौजी गई तो एक अच्छी टीचर जा रही है ना कहीं और, उतना तो सोचो. अगर हम बोलते नहीं हम नहीं ट्रेन करेंगे क्योंकि वो दूसरा स्कूल रोजरी स्कूल शुरू हो गया ना वहां जाएंगे, तो हम ट्रेन नहीं करते क्योंकि हम डर जाते हैं. So it's just that you have to shift the way from fear into courage to abundance. It's a and ये बंदी you have average हमारे जो teachers हैं they've been with me more than 12 years. Yeah, more than 50% of my teachers. 74 teachers we have. Yes. 74 teachers सोचो, हाँ? Of these 440. Yes. But it's great. So just to let you know that when we say that where do we get good teachers from? We get teachers, we make them good because we want to make them good. Right? That's the only difference. हाँ जी. मैंने एक चीज पूरी स्कूल में देखी हाँ कि जी. पॉजिटिव कम्युनिकेशन और टीचर की जो मैच्योरिटी है ना वो बच्चों की भी. जब मैं उनको डांटती हूँ तो पूरा पॉजिटिव नहीं होता लेकिन पॉजिटिवली है. लेकिन इसमें क्या है कि मैंने काफ़ी 2 क्लास में भी गया टीचर्स भी, तो मेरा थोड़ा एक इश्यू भी है, लेकिन उसको पॉजिटिव कम्युनिकेशन में कोई भी प्रश्न होता और बच्चों की मैच्योरिटी भी. अभी ट्रेनिंग चल रही तो बच्चे समझा रहे थे, तो ए लेवल के बच्चे इस लेवल के एक्सपीरियंस के तौर पे जैसे कोई बड़ा एक मैच्योर पर्सन हो वैसे समझा रहा था. और ऐसे 1-2 बच्चों ने काफ़ी जितने भी बच्चों के साथ इंटरेक्शन हुआ, 4th स्टैंडर्ड का एक बच्चा अभिनव करके था, तो उसको मैंने 5-6 प्रश्न पूछा तो जाने कॉलेज का बच्चा मेरे को समझा रहा है. तो मैच्योरिटी जो आती है, तो मैच्योरिटी और पॉजिटिव कम्युनिकेशन जो वाइब्स क्रिएट होता है, कैसे? तो उसके लिए कोई एक्सरसाइज आप टीचर्स के लिए या क्या होता? रोज हम आके डांस करते, तूने मारी एंट्री अभी दिल में से. मैं क्या कह रही हूँ, मैच्योरिटी कब बनती है? जब बच्चों के साथ आप बातें करो. अगर हम बच्चों को बोले आप चुप रहो, आप अच्छा व्यवहार करो, व्हाट इज दैट? बी गुड, कीप क्वाइट. दैट इज द ओनली कम्युनिकेशन. तो बच्चा कैसे प्रैक्टिस करेगा भी बोलना? That's the problem, right? We get into class and we say जब तक सारे बच्चे चुप हैं, बढ़िया क्लास चल रहा है, फिर कोई बोल नहीं रहा है. लेकिन आपने बोलना शुरू किया तो फिर मुझे जवाब भी देना होगा. टीचर के साथ कहाँ पे वो टाइम है? क्योंकि आपने अगर बोला तो वो भी बोलेंगे, तो वो भी बोलेगा, ये भी बोलेंगे.
पूरा स्कूल तो वो पूरा वो सिस्टम आपका जो पेडागॉजी बदल जाता है टू कॉन्वर्जेशन नॉट इंस्ट्रक्शन। तो वो हम कम करते हैं क्योंकि हमें सोचते हैं, जैसे मैम ने कहा मुझे सिलेबस खत्म कर दो, आप चुप रहो, सिलेबस खत्म हो गया, भले आपने सीखा या ना सीखा वो मेरी इंटरेस्ट नहीं है। मैं टिक मार्क बोल सकती हूँ पेरेंट्स को कि ये टॉपिक खत्म हो गया है। That's the shift, right? So I think the idea of conversation, inviting the children into, देखो हमने इनको आपके सामने रख दिया, आप कुछ भी बोल सकते हो, उनसे कुछ भी पूछ सकते हो, हमने इनको ट्रेन नहीं किया है, हमने उनको ट्रस्ट किया है। How many schools actually, if you have a guest of honor coming to your school, how many of you will actually have a 4th standard student take them around? Yeah, they won't, because It you're scared. requires a lot of mind shift change. No, also you trust, right? Yeah. We are trusting them to show up and be the best version of who they are, right? We trust. Now trust is different. Train मैंने कर दिया, आप ये बोलोगे, ये जवाब दिया, आप ये बोलो, तो हम रट्टाबाजी करके हम बच्चों को सिखाते हैं। एक हिल गया तो बच्चे, आप किसी कुछ नहीं, आपने एक दूसरा सवाल पूछा, हिल जाता है बच्चा, डर जाता है बच्चा। I was not prepared for that question, that answer. अगर हम ट्रस्ट करते हैं, आप जाओ यार, आपका दिमाग है, आप बोलो, आप पूछो, आप जैसे, और अगर कुछ नहीं मालूम आप बोलो मेरे को नहीं मालूम है, उसमें कुछ शेम नहीं है। करेक्ट? आई थिंक द ट्रस्ट इन स्कूल्स इज वेरी लेस। हम टीचर्स को भी ट्रस्ट नहीं करते, हम बच्चों को भी ट्रस्ट नहीं करते, हम पूरा पावर हम दे देते हैं पेरेंट्स को। पेरेंट्स बैठ के पूरा चलाते हैं, कितना होमवर्क देना है, कितने टेस्ट देने हैं, कितने किताबें देनी है। It becomes the power of the parent. और फिर पेरेंट आके बोलेगा आपका स्कूल कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि वो पावर आपने दे दिया। Okay, so conversation. Yes, sorry. Sorry. It is not that we give the power. These days, parents They take it. They take it. They take it by saying that we are paying to you for that. So they take that power out of that, basically. And How will you take the power out of him? Is saying you can take your child. Please go. Please go. yeah, that's You what should take we the power sometimes are not able to due to financial Yeah. constraints also, because we have to run this show. No, I completely Also, understand. so every child matters to us sometimes. So we have to bow down, and sometimes we have to bow down in front of the parents also. Yeah, I have to say, I want to share with you one thing that happened. 20 years we've been running the school. We have a fantastic relationship with parents, and we've invested a lot. But where it really came back to us was during COVID. I have to say, I've never been more grateful. During COVID, you know what happened? The fee you had to push off, your parents were allowed not to pay fees, the schools were letting go of teachers, cutting salaries, all of that. I just reached out to my parents. I said, I need you to support me at this time. I was in tears. Everyone wrote with Kiran, not a single teacher will leave. You're keeping them, we're with you 100%. The reason this happened was because of the 20 years of investment, trust, faith, belief. Had I not invested in those first 20 years, I know because a lot of my friends who have schools saying, my God, the parents were doing halal outside the school. Halal bhi tha main. They were being halal bhi hua. And they were storming, police cases कर रहे थे, they were not paying fees. और मुझे इतना लगा कि that relationship जो होता है parents और school में, it's such a sacred thing. और वो टूट गया था काफी schools में. So I think that's what I keep saying. आपका जो investment है, डर के साथ नहीं बनता है, प्यार के साथ, trust के साथ उससे बनता है. And थकना नहीं है और डरना नहीं है. ये दोनों चीजें अगर मैं आपको सिर्फ बताऊं कि स्कूल कैसे चला वो भी हाँ, आपने कुछ बोला, बोलने के बाद एक नई कन्वर्सेशन शुरू हुई, नया सवाल खड़ा हुआ। पॉजिटिविटी बहुत सारी है। हाँ जी. इस पॉजिटिविटी में भाई हमेशा ऐसे नहीं होता, एक सिंगल लाइन नहीं, कभी ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो गुस्सा कैसे, तो आप करेक्ट कैसे करते हो, गुस्सा कैसे करते हो? कभी गुस्सा भी आता होगा तो वो थोड़ा सा एक एक्ट करके बता दो आप। कैसे? इक्वली मैं छाप और झप्पी दूंगी बस. कैरेट एंड स्टिक टुगेदर? Not carrot and stick. I will not accept disrespect. हाँ. That is an absolute no in my books. You do masti, you do all, I'll take.
disrespect to yourself, to your team, to your parents, to your Yes. that's not. It's an absolute no-no. But if you come with an idea, you have a suggestion. I love that. अगर आपने disrespect कर दिया तो so then I get super upset. Nowadays, of course, I'm Buddha. I don't meet these bachas, but what would you get upset about? Disrespect would be a big one. Yeah, big one. True. And it's always for the act of Yeah, it is not for the nothing to do bachas. with the child. So you love the child Yeah. and you say because this act of yours was not respectful for somebody else. I think that's where the reprimanding happens. What would you all say? What would be the non-negotiables at Riverside? Obviously, like last year we had that issue from our class where we did disrespect. There were some cases like that. So through that we talked with the teachers, we resolved, and now I look back, I think I was so stupid of actually doing what I was doing, and now I see myself change through that also. So sometimes even that थोड़ा जो डांट होता है वो हमको भी सुधार देता है, and we learn from that. So that is what I think is what I've learned through the last year. I think when we take things for granted and we don't realize that we are privileged to have something that we have, and then when we get that choti si dart or whatever, that really helps us reflect on ourselves and realize that what I had taken away also. बाथरूम अगर बाथरूम आपने खराब रखा बाथरूम बंद जाके बाहर करो Lights and fans. करो बाहर When we actually go through that experience, if I'm not respecting the lights and fans I have, बंद they'll be shut. In 7th grade, there was 50-degree weather outside. Yeah. We had left the lights and fans on when we had left the school. I think for a week straight. So for a week then, we did not have lights, fans. हमने बंद कर लिया था. Then we played sports also. So the day went on as it would usually go, but we didn't have what we had taken for granted. So I think like that's a really big part of Riverside. That like it's not just saying कि you didn't do it, you should have done it, you should have done it. It doesn't, when it doesn't work, of course you say a couple of times, please do it, but when it doesn't work, then we experience how it feels to not have it. Also देखो अगर हमने लाइट सब बंद कर दिया कोई प्रिंसिपल की प्रॉब्लम अरे लेकिन पेरेंट्स बोलेंगे ये आपने हमारे बच्चों को क्या कर दिया यही बच्चे जाके बोलेंगे क्यों ये इसकी जो पर्पस है क्यों तो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट राइट दे बिकम योर एलाइज इन दैट एक और सवाल है कि मैंने देखा सब में ना ओनरशिप बहुत है स्कूल के लिए, सोसाइटी के लिए, तो वो ओनरशिप अभी तो क्या है कि लाइट चल रही चलती छोड़ती जो आपने भी बताया, वो ओनरशिप ग्रेजुअली कैसे डेवलप किया है आपने? देखो हैबिट्स ओवरनाइट नहीं बनते, ओवर टाइम बनते। हाँ वही मैं कहती हूँ हम थक जाते हैं, बार बार बोले सारे यार मैंने कितनी बार आपको बोला तो मैं थक जाऊँ। अरे यार हमें बस डटे रहना है, पुश पुश। It's not easy. I have to tell you, those are the times probably I get a little fatigued, but otherwise ये अब बोलिए नहीं मैं कर लूँगी। तो हम साथ में मिलके और एक बात जो बोल रहे हैं वो सही है कि हम जब बच्चों को बोलते हैं ना पहले हमको हमें करना है बस। You can't just tell you do this, बच्चे हमको हर बार देखते रहते हैं, तो आप करो बच्चों के साथ करो तभी हम उनसे इंस्पायर होते हैं, वो हमसे इंस्पायर, तो वहाँ सबसे मैक्सिमम लर्निंग होती है। And one of the things I want to share with you really important is हमारी जो पर्पस है रिवरसाइड की कि आप आगे जाके आपको कुछ बदलना है लाइफ में, ठीक है, वो हमारी पर्पस है। रिवरसाइड को वो जैसे रोल मॉडल करना था, व्हाई हैव आई डन अप्रोच डिजाइन फॉर चेंज। हम क्यों जाके अहमदाबाद को चाइल्ड फ्रेंडली बनाते हैं, हमारा ये एक है जहाँ पे इनफैक्ट बाय द वे वी नीड यू हेल्प, वी गॉट Saturday we got the zebra crossing, yes 4 zebra crossing we been allowed to paint, okay so हम क्यों करें बाहर, ये मेरा बच्चा मेरे को पैसे नहीं दे रहा है मैं क्यों करूँ दूसरे बच्चों के लिए, that the children see us do। जो अप्रोच है अब इस साल 15 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम बिग बिजी स्ट्रीट्स को बंद कर देते हैं और पूरे उसको एक प्लेग्राउंड बना देते हैं बच्चों के लिए। म्यूनिसिपैलिटी के साथ हम काम करते हैं, पुलिस के साथ कितनी बार उनका ट्रांसफर हो गया है और नहीं आप फिर वापस क्यों करें, हमें वापस जाना है, हमें फिर से दोहराना है। इजीली तो थक गया, हम बोले अरे पुलिस को नहीं पड़ी है तो हमें क्यों करनी। वी हैव टू कीप रोल मॉडलिंग। जो डिजाइन फॉर चेंज है, इट इज द बिगेस्ट मूवमेंट इन द वर्ल्ड। योगा और डिजाइन फॉर चेंज यही दो एक्सपोज हुए हैं इंडिया से, राइट। डिजाइन फॉर चेंज इज 63 कंट्रीज एंड ग्रोइंग। कैसे हुआ, इस स्कूल से हुआ है, इन बच्चों के साथ हुआ है। तो दे देन नो दैट जब आप
आपको करना है क्योंकि हम पहले कर रहे हैं. तो what she says, you have to role model. रोल नंबर नहीं बनना है, रोल मॉडल बनना है. I just add to this. Sorry ma'am, can Kiran ji, एक मिनट लूँगा. elaborate, sorry sir, elaborate a bit more design for change. Yeah, What I'd like for you to go exactly through the is website. Okay. Yeah, and I'll talk to you anyway about it tomorrow, but send the links. Tomorrow Yeah. they will- We are anyway showing Maybe you tomorrow we have the session. Yeah. We have this session. We have the session. Okay, so I think this is a good time to Okay, wrap one up. minute. Yes, please. My only intake was कि the COVID came in, and every time in the classroom and in school, at home, you used to say mobile chhod, mobile chhod, mobile chhod. And suddenly mobile became an instrument for education in the entire country, we know it. अब सवाल हो रहा है कि बच्चे स्कूल आ गए, मोबाइल के लिए एडिक्ट हो गए, मैं भी हो गया. माई स्क्रीनिंग टाइम was 6 hours per day. Wow. तो पहला मैंने काम किया, जैसे उन्होंने कहा कि आई विल अडैप्ट एंड ब्रिंग ए चेंज इन माई सेल्फ. तो मैंने एक काम किया, 9:30 बजे 10 बजे मोबाइल को बंद कर देता हूँ एंड सुबह 8 बजे से पहले नहीं खोलता.